Live from our Kolkata newsroom on the other side. A day after NIA officials were attacked in West Bengal's East Mednipur region, the NIA arrested two prime suspects from Bhupatinagar in East Mednipur district in connection with the 2022 blast case. Mamata cops have registered an FIR against the central team on the complaint of a woman who alleged that she and her husband were assaulted by the officers. খুব ভোরের দিকে এনআইএর একটি দল আপনার ভূপতিনগর থানাতে পৌঁছয় এবং ভূপতিনগর থানার পক্ষ থেকে তাদেরকে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয় একটি পুরনো একটি কেসে। কিন্তু দেখা যায় যে আগে থেকে তাদের আরো কয়েকটি দল ভূপতিনগরের বিভিন্ন জায়গায় ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত টিম যখন ভূপতিনগর থানা থেকে বেরোচ্ছে সেই সময় খবর আছে যে এনআইএর যে সমস্ত টিমগুলি আগে থেকে ফিল্ডে পৌঁছে গেছিল তাদেরই একটি টিম আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে পুলিশ পৌঁছবার আগেই তারা সেখান থেকে যাকে ডিটেন করাচ্ছিল একজনকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ঘটনায় একটি গাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে এবং একজন মাইনর ইনজুরি হয়েছে যেটা আমাদের কাছে খবর আছে। একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত করা হচ্ছে। The attack on NIA team comes just 3 months after an ED team was attacked in Sondeshkhali by mafia don Shah Jahan's goons. Mamata is on the back foot. From blaming the central agency, now resorting to fear-mongering, warning of a riot. শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। The BJP is hitting out. देखिए, एनआईए का पर हमला हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसको समर्थन किया, हमलाकारी का पक्ष में खड़ा हुआ। जैसे संदेशखाली में भी तृणमूल कांग्रेस पहले तो हमलाकारी का साथ दिया और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ऐसा बोले थे, बाद में पीछे हटा। और यहीं पर भी जो पूर्व मिदनापुर का हमला जो एनआई का ऊपर हुआ, एनआईए का ऊपर हुआ, उस हमला में भी ममता बनर्जी साथ दे रही। If an MP is being attacked in West Bengal, if the NIA team is being attacked in West Bengal, if the ED and central agencies teams are being attacked in West Bengal time and time again, then can the Aam Mati Manush be safe in West Bengal? Today the mind is full of fear and the head and the law and order situation both are reaching a new low, and it is only because Mamta Didi, instead of doing Mati Manush, is doing बलात्कारी बचाओ, बमबारी करने वाले लोगों को बचाओ, ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ। इस सरकार के द्वारा जानबूझकर इसको किया जा रहा है कि यहाँ सेंट्रल जो फोर्स है, सेंट्रल का जितने सारे हमारे फोर्स और जो डिटेक्टर सब्जेक्ट है, मतलब कि जैसे एनआईए है और भी सारे, ये लोगों के ऊपर आक्रमण का मतलब है यहाँ का डेमोक्रेसी का संतुलन विकलन हो गया है। TMC continues to further its misuse of central agencies' charge. उसका तो कोई लड़ाई का ताकत नहीं है। मोदी का दो भाई ईडी और सीबीआई, वो उसको लेके वो लड़ रहे हैं। उसको खास ताकत नहीं है संगठन का, एकदम सही नहीं है। वो भी स्पॉन्टेनियस कोई हुआ था। लोग 2 साल पहले का बात
लेकिन अभी चुनाव के पहले ये सब करना NIA का उचित नहीं था. Even as the political face-off rages on, concerns are only mounting over the law and order situation in West Bengal. Bureau Report, Republic TV. All right, joining me, Ishan Dev from our Kolkata newsroom. Ishan, we have seen a statement coming in from NIA in which they have refuted all allegations made by the Trinamool Congress on the agency and said that the arrests were done following due procedure and protocol and that those were not mala fide or with any other intentions. So there is an investigation going on and the NIA team was only following a certain process. With that clarification, what's the status of the probe that is taking place after the NIA filed an FIR with the Kolkata police, with the Bengal police? Ishan, if you could share with the viewers. Well, Abhishek, first of all, I would like to mention the difference between the statement of the Chief Minister, who is also the Home Minister of West Bengal, and the SP of East Midnapur, where this attack happened. During the package, you have yourself aired the bite of the police superintendent of East Midnapur, and he was saying that NIA teams moved in there. One team was also there to connect with the local police station, and later they got the allegation that one of the teams were attacked and an FIR has been lodged and the proper investigation will be done. But the Chief Minister of West Bengal, she is claiming that the women who were in front of the mob which attacked the NIA vehicle, which we have shown the footage, the visual many a times, the Chief Minister claimed that those women were not the attackers, rather NIA was the attacker. NIA attacked the people of those villages, and that's why this was a resistance from the villagers against NIA. The same thing was claimed by Mamata Banerjee when ED was attacked in Sandesh Khali by the guns of Shah Jahan Sheikh, and it was claimed by the Chief Minister of West Bengal that Shah Jahan is being purposively targeted so that BJP can gain political grounds there in Sandesh Khali. So these are the bizarre statements and bizarre claims coming in from the Chief Minister of West Bengal, and the same kind of strategy is being followed to dilute the investigations, because in Sandesh Khali also, Abhishek, you know that the allegations of molestation against the central forces were being brought. Here also in Bhupati Nagar, where NIA has been attacked by the villagers, especially a women mob who confronted the NIA convoy there. This time also the same kind of allegation is being brought, and FIR has been lodged against NIA officials that they tried to outrage the modesty of women. So these kinds of bizarre allegations and these kinds of dangerous strategies are being taken to prevent the movements of the central agencies in West Bengal who are here to investigate some very serious matters, be it the cases of money laundering or be it the cases of blast or something like that. So this is the situation. In one hand, NIA is lodging FIR against the persons who were the key perpetrators or key accused persons of that 2022 blast case. They have also lodged their allegation against their complaint against this attack. But at the same time, the counter allegations are being brought against them, and I don't know what kind of instruction will go from the Home Minister and the Chief Minister of West Bengal to the police super that in this allegation, in this complaint, what stand the police is going to take that NIA is involved in any kind of molestation. So Ishan, we have to see now that what kind of yes. Ishan, you see, a denial has already come from the NIA that nothing like that happened and that they were following a process. In fact, they came under a violent attack from those around the accused who were being pursued by the agency. So obviously, one side is not telling us the complete truth or giving the complete picture. But then the fact that a Hooghly MP of the BJP, Locket Chatterjee, also came under attack. We have seen what has happened in Sandesh Khali. Is it some kind of frustration building up in the cadres of the Trinamool because of which this is happening, or there is something more? Is it connected with the elections?
or is it being done so that Mamata Banerjee can claim that they have been strong in terms of taking on the centre and its agencies? Of course, Abhishek, you can call it a frustration on the part of the ruling dispensation in West Bengal because, as you were mentioning, the attack on the convoy of Locket Chatterjee, this happened last night when Locket Chatterjee was returning from her campaign. Actually, she completed her campaign for the day last night and she went to a Kali temple near in the Bashberia area, and after the puja there in the temple, she was returning to her home, and at that time suddenly a team of the TMC supporters and workers, they came on the road and they started attacking Locket Chatterjee's vehicle with bamboo sticks and rods, and there was a very violent situation around Locket Chatterjee's vehicle and her convoy. So there no rally was going on there, no procession was being taken out by Locket Chatterjee. She was just returning from the campaign at night, and suddenly a mob comes and launches an attack on her car. So this is the situation there all over West Bengal, and allegations of attack on the opposition candidates, on the opposition workers have started coming from almost all the districts. So the opposition is unequivocally calling it a frustration on the part of TMC, and at the same time you can see that what you were saying, that NIA has clearly denied the allegations which are being brought against them. You have aired the reaction of the SP of East Midnapur also. The SP in the statement made by the SP, there was also no mention of any such incident perpetrated by the NIA officials there. The Chief Minister of West Bengal is making such comments. The TMC workers are going to lodge such complaints, but the police super is at least is not making any such comment, which is contrary to the claim of NIA. Abhishek. Right, obviously police claims are different than what the government or the Trinamool are saying. Ishande, just stay with us. We have some reactions coming into the attack on Locket Chatterjee, mostly from the BJP and even one from the Trinamool defending or justifying that attack. Let's listen to some of those voices, then I come back to you. अभी आज हम लोग का प्रचार चल रहे थे 9:30 बजे, जब पूरा थोड़ा सा खाली था, काली पूजा चल रहे थे। मैं काली पूजा में गई थी, वहां पे सब आसपास का लोग था, बहुत सारा महिला लोग था। हम लोग एक साथ पूजा में पार्टिसिपेट किया था। पूजा से पार्टिसिपेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, मैंने गाड़ी में उठा, थोड़ा सा गया, देखा लंबा बांस को लेके और उसमें बैम्बू के साथ ब्लैक फ्लैग लेके आया और बहुत सारा लोग, अचानक देखा पूरा गाड़ी घेर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ और इतना सामने तोड़फोड़ हो रहा था, मेरे गाड़ी में फ्लैग था और फ्लैग को पूरा एकदम, मतलब जो डंडा में फ्लैग था, पूरा फ्लैग को पूरा तोड़ा, स्टिक को पूरा तोड़ा और बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे। और सामने एक लोग, हमारा सिक्योरिटी था, वो बाहर चला गया था, तो कोई गाड़ी में उड़ने का रात में कोशिश कर रहे थे। हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया और फिर भी बहुत सारा रास्ता, आप बोलेंगे तो 500 मीटर रास्ता पूरा ऐसे करके पूरा जा रहे थे। और उसके बाद पता चला कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ, इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का, मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना ये करेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही मुद्दा है अभी कि करप्शन एंड करप्शन फ्री बंगाल चाहिए। जितना हमको रोकने का कोशिश करेंगे, उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी क्या सोच रहे हैं कि हमारा नेताओं को गाड़ी के ऊपर हमला करके, हमारे नेताओं को
अटैक करके, निश्चित प्रामाणिक जैसा हमारे मंत्रियों को अटैक करके आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे क्या? पब्लिक को डरा के, हमारे कार्यकर्ता को केस देकर, कभी कभी उठाकर, थाना में बुलाकर आप लोग जीत जाएंगे क्या? मैं एक तो वहाँ पर अराजक तत्वों का जो सरकार के संरक्षण में जो है वो एक चुनौती है वो है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती वहाँ पर जो सरकार है खुद अपने आप में है फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए। वो जिस तरह का उसका व्यवहार है और जिस तरह से वहाँ पर जो तालिबानी हरकतें हो रही हैं, उन तालिबानी हरकतों को भी सरकार का संरक्षण और सरकार उसको जो है वो सुरक्षा दे रही है, ये अपने आप में है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग इस दिशा में देख भी रहा है, उसके बारे में बताया भी गया है। जिन क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र है, चुनौती भरे क्षेत्र है, उसके बारे में हमारी पार्टी ने भी लिख करके दिया है और चुनाव आयोग इसके विशेष प्रबंध वहाँ पर स्वतंत्र भयमुक्त माहौल में अपने मतदान का मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता कर सके, ये ज़रूरी है। कुभाषा और गुंडा लोगों का समर्थन लेके हमला करना, इसीलिए जो हमला हुगली में हुआ हमारा कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी के ऊपर, हम उसका निंदा करते हैं और जो दोषी पाया गया उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और चुनाव आयोग को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके चुनाव का प्रचार और वोटिंग सारे हो। All right, Ishan Dev stays with us. Ishan, you heard those BJP leaders and their reactions. What's been the Trinamool position now after NIA also came out with a statement and that very long, detailed recall of the event leading to the attack by Locket Chatterjee herself? Abhishek, not only Locket Chatterjee, continuous attacks are being happen on BJP leaders and candidates throughout the state. As Locket Chatterjee and Agnimitra Pal was also mentioning that there was an attack on Nishit Pramanik. Not only one attack, allegations of more than one attacks, and those visuals have come from Kuch Bihar district on Nishit Pramanik, who is the MOS home for the union government. At the same time, we have seen that Dilip Ghosh, who was the state president of BJP once upon a time and a very heavyweight face of West Bengal state BJP, that Dilip Ghosh has also been very fiercely confronted by TMC workers in the Bardhaman district. Another MOS of the union government, who is Shantanu Thakur, his convoy has also faced an attack and fierce attack in the Nadia district in Kalyani area. At the same time, we are seeing that Locket Chatterjee's convoy is being attacked. So these are continuous attacks which are happening on the opposition candidates, especially on the BJP candidates. And as the Chief Minister of West Bengal, who is also the chairperson of TMC, she is claiming, she is warning rather the opposition party that the opposition party is planning or plotting some riots in West Bengal on 17th, which is the day of Ram Navami. So she is not ready to make any comment on the rioting by her own people, but she is apprehending from earlier that on 17th, if the BJP workers or the workers from the Sangha Paribar are going to take out rallies on Ram Navami, then they are actually plotting some riots throughout West Bengal. These are the comments and remarks very bizarrely being made by the Chief Minister. Abhishek. Right, obviously, those are incendiary comments coming in from none other than the Chief Minister of Bengal herself, Mamata Banerjee, there throwing that at media while walking off from an event. On that note, Ishan Dev, thank you so much. We move on to Karnataka down south. News coming in from there. In fact, Bellary of Karnataka, where the police has seized rupees 5.6 crores in cash, almost 3 kgs of gold as well. The seizures were made by Karnataka police ahead of the polls, and we are getting to learn that the Karnataka cops are also looking into a possible Hawala operation link, as also that the cash could have been meant for elections
or for political purposes, which is going to be a matter of investigation. I am told Ismita from our Kannada newsroom is joining us live from Bengaluru. Ismita, over to you if you can share details about what's the seizure about, any clarity, any idea on from whom that money has been seized, and what are the connections, if any, with any of the political parties? As of now, we got a reaction from Bellary SP, Mr. Ranjit Kumar, that the raid was conducted on a gold merchant's house named Naresh Soni, who owns a gold shop, Hema Jewellery Shop. Approximately 5 crore and 60 lakh hard cash was seized, along with 68 kg of silver, and along with that 103 kg of silver articles, along with that 3 kg of gold was told to be seized from the house of Mr. Naresh Soni. And even the police have filed a case under 98 KP Act, which clearly shows that the money and the valuable items were stored without proper documentation. Now the police are giving the angle of Hawala also. They have the doubt of involvement of Hawala transaction in this, as this is election season, and Bellary infamously is known for the cash inflow during the election time. So no doubt the police are looking into this aspect also. Is this money and the gold articles which have been seized is in any way connected to any political party? But as of now, as the SP himself has told, that they made this raid on information that this person Naresh Soni, who owns a gold shop, has not given proper documentation for the money and the gold which he had kept at home. So they have seized approximately at around 5 crore of hard cash and the gold and silver articles. Now the investigation is going on in two different angles. One, Hawala angle, and other one is also election related angle. So as the preliminary investigation is going, yet many details have to come out. All right, many details to come out, but as you rightly mentioned, that Smita, that Bellary is not infamous for these kind of seizures. On that note, thank you so much for joining us with those details. And moving on, we slip into a short break, and on the other side, a battle of words taking place between former allies Mehbooba Mufti of the PDP and National Conference on the issue of PAGD, the alliance that was formed after abrogation of Article 370 in Kashmir. Also coming up next, more details on the Karnataka cash seizure. हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है
इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब माँ बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापस आएगी तो क्या होगा, माँ को चिंता रहती है कि अगर बहन वापस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। PM takes tukre swipe at Congress, says Kharge's remark on Article 370 has exposed Congress mindset. PM campaigns in Jalpaiguri, launches attack on TMC over Sandesh Khali incident. Mamata cops name NIA as accused in the Bhukti Nagar incident. BJP seeks increased security in the region. Mufti takes on Farooq Abdullah over collapse of Gupkar Alliance. After OAC, Akhilesh Para drops at Mukhtar Ansari's residence, sympathizes with deceased mafia turned Neta's family. We're live and breaking up. Shivangi Shukla getting you the latest coming in this Sunday evening, and you are watching India's election headquarters, where we get you top updates coming in ahead of the Lok Sabha elections. Now, breaking news is coming in from Jammu and Kashmir, where PDP chief Mehbooba Mufti has taken on Farooq Abdullah over the collapse of the Gupkar Alliance, and she has made a couple of statements. We are seeing a huge political turmoil in Jammu and Kashmir. Let's play out that reaction of Mehbooba Mufti. हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही है, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा,
और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है। I just want to go across to Gursimran is joining us, my colleague on this story. And Gursimran, as we count down to the Lok Sabha elections, what we see right now is that the People's Alliance for Gupkar Declaration had ended, and for the longest time now, Mehbooba Mufti has said that Farooq Abdullah has ended it without any prior notice. So what does this really mean coming in just ahead of the Lok Sabha elections is definitely a very big setback for them. So Shivangi, going by the officially, it is the official start of the war of words between the National Conference and the PDP. PDP and NC both know that they cannot survive by going together in the Kashmir Valley because they have the same voter share that has to go either to the PDP or to the National Conference. If both parties go in alliance, that is going to help none of them because they will lose their cadre, and that's why this split in the alliance has taken place. It was already on the cards that neither the Abdullahs will care for the Mehbooba and nor Mehbooba will care for what Abdullahs can do or they want to do in the Lok Sabha elections. Now it is wide open because it is Mehbooba Mufti against the Mia Altaf. However, Ghulam Nabi Azad is in a dicey situation today afternoon. While speaking to us, he said that I am yet to take a decision whether I will be contesting from the South Lok Sabha seat. But that is going to be really very interesting seat where the BJP has given the ST status to the Pahadi community, and they are now going to support the BJP as what the BJP feels for now. Now it has to be seen how things pan out. But one thing that is very clear, that the war of words that has started between the Abdullahs and the Mufti, that is going to go a next level. That is not going to stop till the fifth phase of the election, when the election will take place for the Baramulla Lok Sabha seat, and that is the last Lok Sabha seat to go for polls in Jammu and Kashmir. But this is just an official start, and Mehbooba Mufti has given a clear-cut directions to the leaders that they have to go all out against the Abdullahs. They have to take every possible shot at the Abdullahs so that they can garner vote. Because in Kashmir now, what they are going to sell, both PDP and NC, they are going to sell the abrogation of Article 370 and 35 alpha. They are going to sell what the union government has done to Jammu and Kashmir. So they have a similar thing to sell to the people of Jammu and Kashmir. So for that, they are going to an all-out mode against each other. And today's announcement of Mehbooba Mufti's name as the candidate for the Lok Sabha by the People's Democratic Party, Wahid Farah from the Central Kashmir, where it is expected that Junior Abdullah, Omar Abdullah will be contesting for the Lok Sabha. And in the North seat, though in the North seat, PDP is not considered as a major challenger, but yes, in the Central Kashmir, which now has 4 seats of Pulwama and 1 of Shopian, it is going to be a neck-to-neck contest between the National Conference and PDP on the seat of Anantnag Rajouri as well as the Srinagar Lok Sabha seat. All right, thank you for joining us there. Let's move ahead to the other story we're talking right now. Let's cut across the Prime Minister's roadshow, which will be taking place right now in Jabalpur. Let's go to that, where the BJP has kicked off the campaigning for Lok Sabha elections in Madhya Pradesh, and the Prime Minister is leading the roadshow in Jabalpur constituency, and he will also be later on addressing multiple rallies. And this is the first visit of the Prime Minister to Madhya Pradesh today after the Model Code of Conduct had kicked in. And the Prime Minister is holding the roadshow on your screens. You can see those visuals coming in. Jabalpur, Madhya Pradesh. He's being received with much fervor, much enthusiasm. Many people have gathered there to have a look and catch a glimpse of the Prime Minister as he has come to Jabalpur for that roadshow.
And we see that the Prime Minister's roadshow is starting at the Shahid Bhagat Singh crossing evening and will be culminating in the Gorakhpur locality. The roadshow of the Prime Minister has just begun. Those visuals coming in of the Prime Minister in Jabalpur, and he's being received with much warmth. A beautiful roadshow, and earlier, in fact, the Prime Minister has held a couple of rallies. Today only he was speaking about multiple important issues. Those visuals coming in of the Prime Minister on your screens in Madhya Pradesh. So the Prime Minister is leading the roadshow in Madhya Pradesh, Jabalpur. And this is the 3-state poll blitz of the Prime Minister. He was earlier in Bihar, then West Bengal, and now the Prime Minister has reached Madhya Pradesh. So holding multiple rallies in different states today. The Prime Minister extremely busy with a very, very hectic schedule today. And you see those visuals coming in where he has, the BJP is all ready and it's all set, kicking off the party's election campaign in Madhya Pradesh for the Lok Sabha elections with a very grand roadshow in Jabalpur, a very grand and big roadshow in Jabalpur, where the Prime Minister is being received by hundreds and hundreds of people of Jabalpur, and soon he will also be holding rallies there. The PM is leading the roadshow in Jabalpur's constituency. It's a 1.2 kilometer route which will begin from Shahid Bhagat Singh crossing. It's already begun, and it will be concluding at the Adi Shankaracharya crossing in Jabalpur's Gorakhpur area. Remember, in Jabalpur, BJP's nominee is Ashish Dubey, and the BJP's nominee Ashish Dubey is pitted against Congress's Dinesh Yadav. And like we just told you, that as the Prime Minister is getting a huge welcome in Jabalpur, this is also the first visit of the Prime Minister to Madhya Pradesh after the Model Code of Conduct has kicked in. Now, in Madhya Pradesh itself, there are a total of 29 Lok Sabha constituencies, making it the 6th largest state in terms of parliamentary representation.
भाई चौधरी मनु चौधरी जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, भाई सुनील जी, भाई विवेक विक्की चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, भाई सिद्धार्थ ठाकुर जी, हम सभी युवा साथियों को धन्यवाद देते हैं। तो इस सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो जबरदस्त है। और इस पूरे माहौल पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव जबलपुर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, तस्वीरों में बयां हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों का जो उत्साह है वो कैसा है, फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कैसा माहौल है। देखिए पराक्रम, मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता आपकी आवाज नहीं आ रही धरती है और यहाँ से So viewers, those visuals coming in of the Prime Minister in Jabalpur, and where he's holding a mega road show. It's a grand road show in Jabalpur. And viewers, we know that today is a very hectic day in terms of the Prime Minister's schedule. Today he has been to 3 states: Bihar, Bengal and Madhya Pradesh. He was earlier in Bihar, and after that the Prime Minister's second rally was later on. Now we know that the Prime Minister will be speaking in Jabalpur as well. After rallies in Bihar and West Bengal, Prime Minister is in Madhya Pradesh now, and he will be speaking very soon. He's holding a mega road show in Jabalpur. Now this is coming in, viewers, as the Prime Minister has also made very sharp statements. He has said that in Bengal, the Prime Minister said that Bengal is being ruled by TMC syndicate. So he has been making very sharp statements in every rally that he has been to today, whether it be in Bihar and then West Bengal. And right now he is in Jabalpur, where he's kicked off the party's election campaign in Madhya Pradesh for the Lok Sabha elections, with the Prime Minister Modi holding a grand roadshow in Jabalpur. Enthusiastic crowd receiving the Prime Minister Modi, a grand roadshow where many people have turned up in large numbers to welcome him with a lot of fervor and enthusiasm. And this is coming in as the Prime Minister leading a roadshow in the Jabalpur constituency. It's a 1.2 kilometer route which has begun already from Shahid Bhagat Singh crossing, and it will be crossing and ending at Jabalpur's Gorakhpur area. And the BJP nominee Ashish Dubey is pitted against Congress's Dinesh Yadav. And this is a very special road show, a special visit of the Prime Minister, because this is the first visit of the Prime Minister to Madhya Pradesh after the Model Code of Conduct had kicked in. And 29 Lok Sabha constituencies will be going up for polls in Madhya Pradesh very soon. And those are the visuals coming in on your screen of the Prime Minister in Jabalpur. Soon he'll be addressing a rally, hopefully, where he'll be making powerful statements. Earlier, when he was in Bihar, he said that and reinforced the message, Fir Ek Baar Modi Sarkar. And he has made important messages. He has talked about how poverty has been eradicated from the country. And he has said, I have come here after living through poverty just like you. के रोड शो के जरिए वो सीधे जनता से मुखातिब होते हैं और जो तस्वीरें आप देखते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना एक आकर्षण है, कितना एक प्रेम है लोगों में। वो अब नजदीक से अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। और इन तस्वीरों में एक संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। कल हमने देखा गाजियाबाद में जो तमाम विकास योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी एक
झलक दिखाई दी थी। आज हम यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जबलपुर की संस्कृति, उस पोशाक में तमाम महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम उन जगहों पर जहाँ पहले, दूसरे या तीसरे चरण में मतदान होना है, वहाँ अब धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने संभाली हुई है, चुनावी जनसभाओं के जरिए और रोड शो के जरिए। तो हम देख रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आदित्य भी मौजूद हैं। आदित्य, जो दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे माध्यम से जो तमाम सारे दर्शक हैं भारत के वो देख रहे हैं, देखिए चुनाव के समय पर राजनीतिक दल तो कोशिश करते हैं जनता को आकर्षित करने की, लेकिन हम इन तस्वीरों के जरिए भारत की संस्कृति को भी देख पा रहे हैं। कैसे बयां करेंगे आप? पराक्रम क्यों नहीं देख पाएंगे हम? ये भारत की, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर। जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता है। मध्य प्रदेश की, भारत की संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। और ये पूरे रोड शो के मार्ग पर हम देख रहे हैं पराक्रम, अलग अलग समाज के लोग जो हैं, महिलाएं हैं, शंखनाद कर रहे हैं। सिख समाज के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इस पूरे रोड शो में अलग अलग मंचों पर मौजूद हैं। वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा के साथ। और उस परंपरा के साथ हम देख रहे हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं भगत सिंह चौक से ये पूरा जो रोड शो शुरू हुआ है, ये आदि शंकराचार्य चौक तक जाएगा। और बीच में जितनी भी दुकानें हैं पराक्रम, हम देख पा रहे हैं, इन सभी दुकानों पर मोदी का परिवार लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। कई जगहों पे बालकनी पर महिलाएं जो है वो हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। और हाथ में देखा जाए तो मोदी की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटआउट हाथ में उनके मौजूद हैं, हाथों में फूल उनके पास हैं। जैसे ही उनका काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो रथ पूरा जैसे ही लोगों तक पहुंच रहा है, तो दोनों ही तरफ से अगर देखें तो लोगों का शोर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए पराक्रम, समझना होगा हमको, Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश को तो, क्योंकि यहां के लोग बहुत जानकार हैं, समझदार हैं, आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे?
मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल खिलाने की दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो सफल हो वो मिशन भारतीय जनता पार्टी का। लिहाजा अब रोड शो की से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखा जाए तो अब आगाज हो चुका है। और देखिए प्रधानमंत्री के ठीक बगल में आशीष दुबे खड़े हुए हैं। ये वो आशीष दुबे हैं जो जबलपुर की प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे आप देखेंगे राकेश सिंह खड़े हुए हैं। राकेश सिंह मध्य प्रदेश सरकार में फिलहाल तो लोक निर्माण मंत्री हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने जबलपुर की संसदीय सीट का नेतृत्व किया है। वो लंबे समय तक जबलपुर से सांसद रहे हैं और हाल में विधानसभा चुनाव में जबलपुर से सांसद पद से इस्तीफा देके वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और अब मध्य प्रदेश में मंत्री है। लेकिन एक नई लाइन तैयार हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रही है। तमाम नए चेहरे पार्टी ने दिए और ये वो आशीष दुबे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पराक्रम, और ये वो नए चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में आ रहे हैं। और ये वो आशीष दुबे के समर्थन में जब आप देखिए ये स्ट्रेटेजी देखिए भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की कि वो प्रत्याशी के चुनाव के प्रचार में सबसे पहले पहुंचे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और ये कहीं ना कहीं न सिर्फ आशीष दुबे के लिए बल्कि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मॉरल बढ़ाने वाली बात होगी। केंद्र का संगठन नेतृत्व प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े हुए हैं। कमल का फूल एक जिस तरीके से पार्टी कहती है कि हमारे लिए कमल का फूल निशान ही एक जनता के बीच में है, चेहरा तो होता ही होता है लेकिन फूल का निशान होता है। लेकिन हर एक प्रत्याशी के पीछे पार्टी खड़ी है, ये एक बहुत बड़ा संदेश देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो संस्कारधानी की छवि पूरे देश में बनी हुई है वो संस्कारधानी अपनी छवि को इस पूरे रोड शो में प्रधानमंत्री को बता रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ये धरती अपने आप में आज प्रधानमंत्री को बता रही है। किस तरीके से सारी संस्कृतियां सारे धर्म मजहब एक होते हैं और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, वो आज यहाँ पर इस रोड शो के दौरान पराक्रम देखने को मिल रहा है। पूरा जबलपुर हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा हुआ था और ये जो पूरा 1.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है पराक्रम, ये पूरा दायरा आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साइड में खड़े हुए हैं। मोहन यादव के हाथ में भी कमल का फूल है, प्रधानमंत्री के हाथ में भी एक कमल का फूल था। तो कुल मिला के पराक्रम ये कहा जा सकता है ये एक भव्य तस्वीर है प्रधानमंत्री के स्वागत में। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बने हुए। देखिए शैलेंद्र, आदित्य ने जिस बात का जिक्र किया कि जो एक तो नए चेहरों को मौका देने की बात और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको साथ में लेकर प्रचार कर रहे हैं उनके समर्थन में, ये किस तरह की राजनीति का संदेश देता है ये दृश्य? देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो बदलती रहती है। हमने जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखा था तो तमाम कद्दावर नेता जो केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था और मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि कई प्रदेश में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जो वो सीटें खाली हुई लोकसभा हुई वहां पर कई जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया। ये दिखाता है कि बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि चुनाव दर चुनाव संगठन के लोगों को, जो संगठन में अनुभवी लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस को जब से कर्नाटका में मौका मिला है तो इन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है
ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांत Good evening and welcome, friends, to this Sunday edition of Biggest Story Tonight, in which we're going to focus on a slip of tongue made by Congress President Mallikarjun Kharge. Jairam Ramesh came to his defense saying that Mallikarjun Kharge in fact slipped in a strategy of the Prime Minister and Union Home Minister on Article 371 instead. But the Prime Minister getting back with the tukre jibe at the Congress party and saying that this is Congress's mindset when it comes to Kashmir. It does not think of Kashmir as its own. That's why Kharge in that slip of tongue said that what Kashmir has to do with you. That's going to be our focus. But let me get you the headlines first. Prime Minister takes tukre swipe at Congress, says Kharge's remark on Article 370 has exposed Congress's mindset. Bengal governor calls for action, but TMC netas set to campaign at NIA attack site in East Medinipur. PM rips apart Congress over Kharge's Kashmir remark, reiterates J&K is an integral part of India. A day after NIA team attacked in Mamata's bastion, Locket Chatterjee's convoy attacked in Hooghly now. AAP netas converge at Jantar Mantar in Delhi, hold hunger strike as a mark of solidarity protest over Arvind Kejriwal's arrest. In Kashmir, Mehbooba Mufti takes on Farooq Abdullah over the collapse of Gupkar alliance. All right, in fact, we are getting in live pictures of Prime Minister having a roadshow in Jabalpur, Madhya Pradesh. Remember, Prime Minister has been crisscrossing the country as part of the BJP campaign. Yesterday, he covered Uttar Pradesh and Rajasthan, and today he has done 3 states, Bengal, Bihar and now Madhya Pradesh in Jabalpur. As we saw yesterday, so today, accompanied by the Chief Minister of Madhya Pradesh, Mohan Yadav, and State BJP President V.D. Sharma, Prime Minister Narendra Modi there in Jabalpur carrying out this roadshow. And we have seen the Prime Minister carrying out a hectic campaign as it happens today, covering 3 states almost every other day. The kind of crowd that's present, like we saw in the case of Ghaziabad yesterday, in some ways a reflection of the kind of popularity that the Prime Minister enjoys with the masses. Most of them perhaps BJP cadres, but then the numbers speak for themselves. वहाँ रोती बिलखती महिलाओं को देखेंगे तब आपको लगेगा कि इस रोड शो का साइकोलॉजी क्या है। बाकी लोग देखने के लिए और जनता अपने नेता को उत्साहित करने के लिए खड़े हो जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप रोड शो पे करने वाले, जब आप ऐसे लोगों को, जैसे जबलपुर में आप देखिए, उनके चेहरों में जब आप उत्साह देखते हैं, उनके पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए जो अभिवादन है, वो अभिवादन का जिस तरह से वो एक क्लैपिंग करते हुए वो जो स्वर के साथ में वो उनका घोष होता है, जय घोष होता है,
तब आपको लगेगा कि ये इसमें बनावटी नहीं है। ये एक दिल से कनेक्शन है जो पीएम मोदी इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुड़े हैं। तो ये हम लोग चर्चा जब करते हैं पीएम मोदी के रोड शो का, तो आप देखिए कि देश के किसी भी कोने में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में पीएम रोड शो कर रहे हो, या लक्षद्वीप में रोड शो कर रहे हो, कन्याकुमारी में रोड शो कर रहे हो, तमिलनाडु में रोड शो कर रहे हो, या फिर आप ये देखिए गुजरात के सूरत में रोड शो कर रहे हैं, अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हो, पब्लिक में जो लोगों का रिएक्शन है वो देखने और समझने की चीज है कि लोगों में जो भाव विह्वलता है पीएम से कनेक्ट करने का, पीएम के साथ में अपने भाव को मिलाने का, ऐसा बिरले ही दुनिया के किसी नेताओं के रोड शो में देखने को मिलता है। ठीक बात है। तब ये बात सामने में आती है, लोगों को समझ में आती है कि जब आप एक जननायक की बात कहते हैं तो जननायक कोई फ्रेज नहीं होता है। जननायक लोगों के आंखों में वो जो एक अपने नेता को लेके उद्गार है, उत्साह है, वो जो एक कमिटमेंट है कि वो विश्वास है, भरोसा है, ये उसको एक जननायक बनाता है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो घरों में ऊपर लोगों ने बाकायदा बैनर लगाया हुआ है कि मेरा घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर, मेरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार। मतलब आप ये समझिए, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस समय में देखिए 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, तो आप देखिए कि देश में उसका कितना रिएक्शन हुआ कि हर लोगों ने अपना सोशल मीडिया के प्रोफाइल चेंज करके सबने कहा कि मैं भी चौकीदार। तो ये जब अभी लालू यादव ने पिछले जो ऑल इंडिया गठबंधन का कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो मोदी का परिवारवाद पे जो हमला है, तो मोदी का अपना परिवार कहाँ है? तो ये रिएक्शन के बाद जब पीएम ने कहा कि मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, तो वो रिएक्शन के बाद आप देखिए कि सारे सोशल मीडिया में आपने कब से बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ लोगों ने भी अपने को इसको मोदी का परिवार के नाम से वो अपना सोशल मीडिया पे अपना चेंज किया और इस बात को बताया। लेकिन वो जो लोग इस बात को बताते हैं कि जब पीएम ने कहा कि इस देश के 140 करोड़ देशवासी का परिवार ही हमारा परिवार है, तो आज जब आप जबलपुर में देख रहे हैं कि घरों पे, छतों पे वो बैनर लिए हुए, पोस्टर लिए हुए, और लोग जब बताते हैं कि ये मोदी का परिवार है, तब आप मानना पड़ेगा कि मोदी सच में इस देश के आम से लेके खास तक हर के दिलों में अपनी एक जगह बनाए हुए हैं। तो हर कोई मानता है कि ये मोदी का परिवार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव भी बने हुए हैं जो खुद जबलपुर में मौजूद है। आदित्य, देखिए जो तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हम ये माना जाए कि ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, ये कमाया हुआ विश्वास है। ये परीक्षा के बाद जो परिणाम, जो परिणति होती है, ये उसकी तस्वीर है जिसमें पहले जो कहा वो करके दिखाया और उसी के आधार पर अब आगे के चुनाव के लिए भी समर्थन मांगने के लिए निकले हैं। आदित्य, आधे घंटे का वक्त इस रोड शो को हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे रोड शो में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर आपको महिलाएं नजर आएंगी। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जिनको ताकत देने की बात शायद भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रधानमंत्री करते हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य रहा, अगर आप टिकट बंटवारे के लिहाज से भी देखें मध्य प्रदेश को, तो 29 सीटों पर 6 महिला उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए हैं। और वहीं अगर मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल है, प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगर आप कांग्रेस को देखने जाएंगे तो कांग्रेस ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उसमें केवल 1 महिला उम्मीदवार उतारा है। और आप इस तरीके से अगर समझें तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़े, मजबूत हो महिलाएं, चुनावों में महिलाएं आए, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास भी महिलाओं का जो पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री के प्रति है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो जिक्र इससे पहले थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी करते हैं कि ये तस्वीर देखकर जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए जनता क्या चाहती है, जनता के मन में आखिर क्या है और जनता का भाव आखिर क्या है, वो जब इस तरीके के रोड शोज में सामने निकल कर आ जाता है, वो भाव अगर दिख रहा होता है तो वो भाव कहीं ना कहीं वो पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं साफ नजर आती है। और एक चीज और देखिए पराक्रम, इसको एक और नजरिए से समझने की कोशिश करिए कि पार्टी की रणनीति आखिर किस तरीके की है। इस पूरे रोड शो में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं।
खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा, वो फिलहाल प्रधानमंत्री के पास आपको भले ही नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन पार्टी ने उनको दूसरी जगह पर प्रचार के लिए भेजा हुआ है, वो दूसरी जगह प्रचार कर रहे हैं। जरूर पार्टी एकदम जैसे कहें कि चारों तरफ अपने पूरे एक तरीके से रणनीति के साथ काम कर रही है, कैसे अधिकतर जनता के बीच पहुंचा जाए, कैसे पार्टी की रीति नीति को जनता को बताया जाए, और 370 हर बूथ पर जिस तरीके से वोट लाने का टारगेट पार्टी ने तय किया है, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य पर पार्टी अब आगे बढ़ रही है। और देखिए, ये जो विश्वास आपको दिख रहा है ना, ये पिछले 10 सालों में पराक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की देश की जनता के साथ में, जो दावे किए, जो योजनाएं जनता के लिए लेकर आई, उसका फायदा अगर लोगों को हुआ है तो तभी लोग इस तरह के रोड शो में पहुंचते हैं। वरना आप पूछिए, कोई व्यक्ति अगर अपने घर में बैठा हुआ होगा तो वो टीवी के जरिए भी देख सकता है, लेकिन ये सड़कें आखिर क्यों भरी हुई है, ये एक सोचने वाला विषय है। ये बड़ी मात्रा में अगर मान लीजिए लोग खड़े भी हुए वहां पर, तो क्यों फोटो खींचने की लड़ाई दे रहे हैं लोग, क्यों वहां पर अपने मोबाइल के फ्लैश दिखा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं लोकप्रियता बताता है एक लीडर की, किस तरीके से पूरा देश All right, Prime Minister there in Jabalpur carrying out that road show, which has become a trademark of sorts with the Prime Minister, in which he covers a number of constituencies, engages directly with the masses and the electorate. And that's what a popular leader typically does. And if you look at the number of people present on the road, not all of them BJP Karyakartas, gives you an idea of the kind of popularity that Prime Minister has with the masses. We saw the same pictures coming in yesterday from Ghaziabad. Before that, we have seen those pictures coming in from Jodhpur. Before that, we have seen those pictures coming in from Pathanamthitta in Kerala. Wherever Prime Minister is going, these road shows in the evening becoming a sort of a hallmark of the Modi campaign in 2024. But moving on, and the story on which we are focusing this bulletin, which is a massive BJP versus Kharge showdown that erupted after the Congress chief questioned India's connection to Kashmir at a public rally in Rajasthan's Churu yesterday, albeit a slip of tongue, as Jairam Ramesh called it. The BJP has criticized Kharge for referring to Article 370 as Article 371. But more importantly, what Kharge said was that what has that to do with you people in Churu? That got the BJP picking up that line, and the Prime Minister said it exposed the tukre mindset of the Congress party. And Home Minister Amit Shah also got in and said that the grand old party's Italian culture is to be blamed for not understanding the very idea of India. BJP leaders further slammed the Congress and alleged it had no love for Kashmir. Take a look at this report, which brings in all those sound bites in this political season, and then I come back. और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो। With blooper after blooper by the Congress, the BJP has gone all guns blazing at the grand old party. राजस्थान में क्या किए इसका हिसाब हम दे रहे हैं। The latest in the long list of Congress's blunders is Kharge's Article 371 comment. यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो। Expectedly, the BJP, including Prime Minister Modi, did not let it pass unnoticed. इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। पूर्व न्याय पत्र नाम देने वाले लोगों ने
आज ही जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, कल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान में ये बोलते हैं कि धारा 370 हटने से यहाँ कौन सा फर्क पड़ता है, ये क्यों बोलते, अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय किया जा सकता है वो इससे साफ हो जाता है। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन कर के आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी आतंकवादियों को। कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये दर्शाती है कि ना तो कांग्रेस ने कभी कश्मीर को माना और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपना समझा। उसी का परिणाम है कि आज वहां पर शांति व्यवस्था बनी है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, गांववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। Home Minister Amit Shah also took a dig at the Congress, saying its Italian culture is to be blamed. BJP President JP Nadda also seized on the issue and said, "Another day, another gem from the Congress." Meanwhile, Congress leaders have come out in defense of its chief. Now, will Congress apologize for its blooper or come up with another defense is anybody's guess. Bureau Report, Republic TV. All right, that's going to be our focus this evening at 9 p.m. Do join in. And moving on, Union Minister Smriti Irani took a dig at Rahul Gandhi today while campaigning in Chennai. Irani said, while many like him may come and go, the nation would remain. She also charged the India alliance of double standards while using the name of India, even as it backed the Tukre Tukre gang in Delhi. Listen in. Campaigning in Chennai, Union Minister Smriti Irani launched a pincer attack on the Gandhi sign. Smriti Irani said many like Rahul Gandhi have come and gone, but Hindustan is, was and will remain. Smriti said Rahul will be booted out from Wayanad just like Amethi. अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडिया अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। Smriti Irani, who has been relentlessly campaigning, is going all out to corner the Indie bloc over a slew of issues including the Sanatan insult and the Pran Pratishtha boycott. Bureau Report, Republic TV. All right, Aam Aadmi Party ministers and workers staged a hunger strike across India today to protest against the arrest of AAP convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in Liquorgate, who is the prime accused in the case, while the Enforcement Directorate claims proof against him, calling him the mastermind of the scam. AAP continues to rally behind their leader. Take a look at this report on what all protests took place, particularly at Jantar Mantar in Delhi. The Aam Aadmi Party leaders and workers observed a pan-India Samuhik Upwas against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party has organized this protest, hunger strike over here in the national capital at Jantar Mantar to register their anguish against the arrest of their party convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now the Aam Aadmi Party from this particular dais is crying vendetta, they're crying foul, that it is because of the BJP ruled government at the centre who's trying to muzzle the voice of the opposition, and as they claim that this arrest is a bid in support of that vendetta. Despite the grave allegations, AAP ministers continue to cry foul.
लोगों में जो सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद, जो सहानुभूति है लोगों की, वो बिल्कुल साफ निकल के आ रही है। और इलेक्शंस के बिल्कुल सर पे जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, ये बिल्कुल गलत है। और इस तानाशाही के खिलाफ जो लोग हैं वो बिल्कुल इस बार लोकसभा के इलेक्शन में वोट के द्वारा जवाब देंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। In response, the BJP too hit the streets. देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहाँ अंदर जा नहीं सकती। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। Launching Sharab se Sheesh Mahal campaign, BJP called out the corruption model of the Delhi Chief Minister. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है। और आज जो यह आम आदमी पार्टी एक बनावटी सहानुभूति का ड्रामा कर रही है, उसको दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। The liquor gate face-off just refuses to simmer down. Bureau Report, Republic TV. All right, moving to Kashmir. After the collapse of Gupkar Alliance in the valley, PDP chief Mehbooba Mufti has taken on Farooq Abdullah, saying she was disappointed over the decision of the Abdullahs to snub ties with the party on the issue of candidates in Kashmir Valley, particularly Anantnag Rajouri seat, which is the traditional bastion of the Mehbooba Mufti party. Listen in. हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है।
Right, in election season, ex-Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel of the Congress Party has made a brand new controversy. This time wearing a cap inside a Gurudwara while on an election tour in Rajanandgaon. Now, his misadventure has triggered sharp reactions from the Sikh community. Take a look at this report. There seems to be no end to controversies when it comes to Bhupesh Baghel. In the latest, he has come under fire for sporting a cap inside a Gurudwara while on an election campaign in Rajnandgaon. Dongargaon MLA was also present with the former Chhattisgarh CM and he too wasn't covering his head. Now the Sikh community is protesting against the former Chief Minister for allegedly violating Gurudwara rules. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेतागण और वहां के स्थानीय विधायक साहू जी तो गुरुद्वारा साहब में माथा लगाए। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर पे टोपी लगाई हुई थी और उसके साथ ही अपने पैरों और सॉक्स पहने हुए थे। ये गुरु घर की मर्यादाओं के खिलाफ है। The BJP has also lambasted the former chief minister who continues to be riled in the Mahadev betting app case. Well, every religious place has a sanctity and has its own protocol. And so has Gurdwara, so have Gurdwaras. There's something called as Rahat Maryada, under which you can't wear socks and you must cover your head with safa, patka or a turban. Not with a cap. Caps are not allowed inside the Gurdwaras. But he is the Chief Minister of the state and he should be aware of the basic protocols of the religious places. कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथियों द्वारा जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर जो रहत मर्यादा को तोड़ा गया, गुरुद्वारे की जो अपमान किया गया, इससे सारा सिख समाज बहुत आहत है। Now, even as the face off continues to rage on, both Bhupesh Baghel and the Congress party are yet to issue a statement. Bureau Report, Republic TV. Right, the Election Commission will today begin voter awareness drive, or did actually, at J&K's largest shrine, Sri Mata Vaishno Devi at Katra. This in order to raise awareness among pilgrims about the importance of their vote. Take a look at this 2-minute report. कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत। तो ह्यूज रश चल रहा है और यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, यंग वोटर्स। तो हमने ये डिसाइड किया कि आज का दिन क्यों ना जो मौका भी है, दस्तूर भी है, उसका फ़ायदा उठाया जाए और रीच आउट किया जाए ना केवल J&K के वोटर्स को बल्कि पूरे देश के वोटर्स को, ताकि वो अपने अपने पोलिंग डे पे अपने घर से निकलें, पोलिंग बूथ तक जाएं और वोट करें। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसको पर्व की तरह मनाना है, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे इलेक्शन मशीनरी की यही कोशिश है कि ये जो पर्व है, आप जानते हैं फेस्टिवल सीज़न चल ही रहा है, तो इसको भी एक बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए और लोगों को रीच आउट किया जाए। In a first of its own kind of a step, the Election Commission of India has started a new initiative to aware the voters from throughout the country, from Jammu and Kashmir. For the first time, from a religious pilgrimage site, they are starting the sweep campaign to aware those who have come to pay pilgrimage at Mata Vaishno Devi Shrine. And here, various activities have been launched by the district administration so as to make the people aware, as thousands and thousands of pilgrims that are coming here to be part of this holy pilgrimage, as this is the entry point to Sri Mata Vaishno Devi Shrine, where thousands and thousands of devotees they come on daily basis. And for the same, now this has been launched as one of the key and the pilot projects so as to make people aware about the importance of their vote. With Gaurav Sahani, Gursimran Singh for Republic Media Network.
Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. इंडी एलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। मोदी और योगी आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है और इसलिए हमने एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आया है। क्या इंडी गठबंधन के नेताओं से ये बातें आपने कभी सुनी है? इतना ही नहीं, हमने तो अब हर राज्य में एकता मॉल बनाने की योजना बना दी और हर राज्य में जो एकता मॉल बनेगा उसमें हिंदुस्तान के हर जिले की चीजें बिकेगी। आप केरल जाओगे तो वहां के एकता मॉल में सहारनपुर की चीजें बिकती मिलेगी। आप बंगाल जाओगे तो वहां एकता मॉल में सहारनपुर जिले की चीजें मिलती रहेगी। मतलब हम देश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हर जिले में और दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहते हैं। हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है ताकि पारंपरिक कला से जुड़े सभी परिवारों की आय बढ़े। इसका लाभ हमारे सहारनपुर के शिल्पियों को बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने Welcome. Today we are going to talk about a sticky situation of honey and honey crystallization in our program Beyond the Beehive, unveiling the secrets of honey. Have you ever opened your jar of golden goodness only to find it cloudy, thick or even completely solid? Don't worry, you're not alone. Crystallized honey is a common sight, but it often leads to confusion. Is it spoiled? Is it still safe to eat? The truth is, honey crystallization is a natural phenomena that actually tells us something good about the honey we are holding. Today we'll deep dive into the fascinating world of honey and uncover the sweet truth about crystallization. We'll also bust some common myths and learn how to enjoy crystallized honey in all its delicious forms. Let's discuss honey's diverse benefits. Honey boasts a treasure trove of health benefits and a fascinating history. It is a natural superfood, a staple in kitchens worldwide, and a revered natural remedy for centuries. Packed with essential vitamins, minerals, and antioxidants, it offers a delightful and healthy alternative to processed natural sugars. Here's a glimpse into some of honey's benefits. Honey has been used for millennia to soothe cough, heal wounds, and boost immunity. Its antibacterial properties make it a natural remedy for sore throat and minor cuts. Weight management aid. Studies suggest that honey can help regulate blood sugar and curb cravings, potentially aiding in weight management efforts. Immunity booster. Rich in antioxidants, honey helps fight off infections and strengthens the body's natural defenses. Energy enhancer.
Honey provides a natural source of energy, ideal for athletes and those with active lifestyles. Heart health hero. Honey may contribute to lowering bad cholesterol and improving blood flow, promoting overall heart health. Digestive aid. Honey can soothe an upset stomach and promote healthy gut bacteria, aiding digestion. Now let's welcome on our show our first guest, Dr. Naveen Kumar Patle, Additional Commissioner and Executive Director, NBB, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare at Government of India. Today, Dr. Patle joins us to discuss the significance of honey. Dr. Patle, as the Executive Director of the National Bee Board, first up, can you please elaborate on the initiatives taken by NBB to promote awareness about honey crystallization among beekeepers and consumers in India? Yeah, the National Bee Board, it's a national level agency in the country which are promoting bee sector, especially scientific beekeeping in the country with the objective to promote honey production, not only honey production but also to promote the pollination in the crops. And as we know, the pollination in the crops is very much important to promote or to increase the production and the yield of the crops. And as far as the honey sector is concerned, we are promoting different kinds of honey, depends on the flora available in the country. And as we know, in our country having different agroclimatic conditions, we are having different kind of flora. Flora means different kind of plants available in different climates, and every plants need the pollination with the help of honey bees. So here the role of honey bees are very important, and in the globe the importance of honey bees are realized everywhere wherever the pollination is required. So nowadays, as a National Bee Board, we are promoting this sector, especially beekeeping sector, with the help of different technologies for promotion of production, productivity, then post-harvest management, especially the processing of honey, making of different products out of honey, and also we are focusing on research to promote this sector for livelihood promotion. And also we have also declared beekeeping as a fifth agri input, so that the beekeepers, they can take the benefits of beekeeping sector. And apart from that, National Bee Board organize various programs with the help of state governments, with the help of beekeeping societies and other stakeholders to promote beekeeping in the country. How can honey producers ensure the quality and purity of honey, especially when dealing with crystallized honey, to maintain consumer trust in the market? Generally, there is a very wrong perception in the consumers. The honey is crystallized and they consider as impure, but it doesn't like this. Honey is crystallized, is a natural phenomena, depends on the, as I said, depends on the flora, depends on pollens, and also depends on the FG ratio, fructose glucose ratio. So whenever any beekeepers, if they are selling the crystallized honey, they should simply say it is a natural phenomena, and it is a when it is crystallized, again it can be used in different way, and when it gets some temperature, again it comes in original form. So generally in winter season the honey is crystallized. Another is, any honey, whether it is crystallized or not, there are some sampling procedure, testing procedures. If that honey is tested through that procedures, even if it is crystallized, then we should not worry about that. We should not think about the impurity. Only the thing is that adding anything from outside is a cause of the impure honey. Considering the potential health benefits of honey, can you comment on the impact of crystallization on the nutritional value of honey? Yeah, this is a good question. The crystallization or non-crystallization, from health point of view, I cannot say there is any difference. But honey, if you are using the honey in daily life, or you are using honey with lukewarm water,
or you are using honey with chapatis or breads, especially the crystallized honey, definitely it will give the good impact on human health. Another point is, nowadays people are using honey in different forms, like even though in daily life they are in morning time they are using with lukewarm water, or also in evening time they are taking the honey, especially in if you are feeling any cough and cold, people are using the honey with lukewarm water. So it is giving good impact on our health. And National Bee Board also has given some projects to observe the effect of honey on different diseases. We have given one project to the IIT Roorkee to find out the effect of using honey to check the colon cancer also. So the study is going on. So these kind of studies we are supporting to various organizations. Also we are developing the database, especially the characteristics of different honeys available in the country, so that we can understand, suppose mustard honey is there, or acacia honey is there, eucalyptus honey is there, coriander honey is there, any kind of honey available in the country, what kind of characters are there, what kind of attributes are there, and how one honey is different than other honey. So we are identifying, or we are working on this aspect, and very soon we will be getting the data, so that we can also say scientifically this suppose any honey is there, what kind of effect on the human body is there, that can be also a part of our recommendation. Dr. Patley, looking ahead, what is your vision for NBB in terms of promoting research on honey and its potential benefits for Indian consumers? As we know, we are producing around 1,42,000 metric ton of honey in the country, and last year we have exported around 80,000 metric ton of honey in different parts of the world. So nowadays, as I said, pollination is very important. In some crops, without pollination, the fruit setting and seed setting is not there. So one of the major objective is pollination. Then we come to the product. So honey is a product, and various different byproducts are also there, like pollen is a byproduct, again royal jelly is a byproduct, venom is a byproduct, then apart from that the beeswax is also a byproduct. So these byproducts are getting momentum now, they are getting the good market. So whenever we talk about the promotion of this sector, we have started one National Beekeeping and Honey Mission with the objective to promote production, post-harvest management and research also. In research part, even though in some parts of the country we are still working with very traditional practices, and these traditional practices generally gives very the quality, or you can say the yield of the honey is poor in traditional practices. We talk about the scientific practices using the scientific beehives, and again the scientific the colonies and different species, and also the floral availability in the season. These all factors affect the production of honey. So in research we are generally focusing on the productivity also, and nowadays there is a challenge for some residual effect on honey. So we are also working on that aspect, to how to avoid the residual effect on honey, and another is how to increase the productivity of honey. Then another important aspect is the value added products of honey. Nowadays the honey is consumed in various ways, especially honey drinks are there, honeycomb is also there in different. If you go to the hotels, especially 5-star hotels, you will find the honeycomb, and in the breakfast also people wants to use, or they are preferring the honeycomb in the breakfast also. So honeycomb is one of the product which is also being promoted, and also it is very useful if you take honeycomb with your breakfast, especially from health point of view. Thank you, Dr. Patley. This is valuable information for both beekeepers and honey consumers. Yeah, thank you, Suesha, for making this conversation, especially beekeeping sector.
and especially to promote this sector in the country with respect to the beekeepers, with respect to the farmers, and they can understand. And a very important point is the consumer point of view, the perception, the wrong perception which is prevailing in consumers about the crystallized honey. So I hope this entire conversation will give the boost up the consumption of honey in the country. Now, as per FSSAI report, crystallization is a natural process that occurs in pure, unadulterated honey. Processed honey, often heated and stripped of its beneficial properties, is less likely to crystallize. So the next time you encounter crystals in your honey jar, rejoice. It is a testament to the honey's purity and natural state. दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हिंदुस्तान की है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, सबसे पुरानी भाषा का गर्व प्राप्त है, वो मेरी तमिल भाषा है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब माँ बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके। Now let's hear from some viewers to what they have to say. ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट ये कि जो जम जाता है शहद सर्दियों में, लेकिन इट्स नॉर्मल, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं। वो तो एटमॉस्फेरिक है, एक नेचुरल लिक्विड है जो जम जाता है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर गेटिंग कोल्ड। ऐसा मिथ नहीं, हनी के खाने से अदरक शहद कहते हैं, जब गला खराब हो, घर का एक देसी नुस्खा होता है कि थोड़ी सी अदरक में कूट के शहद मिलाओ एंड उसको खाओ तो उससे गला खुल जाता है, गला ठीक हो जाता है। हनी का बेनिफिट यही हो सकता है कि वो एक नेचुरल शुगर है, हम उसको चीनी के बदले अगर यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा हमारी हेल्थ के लिए। कभी कभी जैसे खांसी वगैरह हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है शायद। मैम जो शुगर होता है वो ज़्यादातर फैट को इंक्रीज़ करता है, लेकिन जो हनी होता है अगर हम उसको गर्म पानी के साथ अगर हम उसको पीते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसे कि लोग मतलब अपना वेट डिक्रीज़ करने के लिए भी मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो सुबह में गुनगुने पानी के साथ वो शहद डालकर उसको पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, और शुगर को तो अवॉइड ही करना चाहिए। बेनिफिट्स यही है कि लाइक हनी को हम लोग आइज़ में भी यूज़ करते हैं, और जैसा मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि उसको गुनगुने पानी के साथ पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। What do you know about crystallized honey? These are great questions, and we'll address these concerns and more throughout the show and have solutions to these questions. Have you ever noticed your honey developing a grainy texture or crystals, especially during colder months? Fear not, honey lovers. This is a natural phenomena called crystallization, and it is a good sign.
Honey is a super saturated solution of natural sugars, primarily glucose and fructose. Imagine a sugary drink that becomes cloudy when chilled because it holds more sugar than the water can dissolve. Crystallization in honey works similarly. As temperatures drop, glucose molecules come together, forming the crystals that we see. Crystallization is a natural process that occurs in pure honey, which preserves its goodness by changing to a supersaturated state, forming crystals. So the next time you encounter crystals in your honey jar, rejoice. It is a testament to the honey's purity and natural state. Interestingly, crystallized honey, also known as creamed honey, is a popular choice in countries with high honey consumption. In places like Germany and Australia, consumers relish the unique texture and spread ability of creamed honey. It is a versatile ingredient enjoyed on toast, blended into smoothies and baked goods, and even incorporated into marinades for a touch of sweetness. Honey's significance extends far beyond its culinary uses. It has held a special place in various cultures throughout history. Let's explore some fascinating insights with Ms. Manjari Chandra, founder of Manjari Wellness. Ms. Chandra, thank you for speaking to us. How do you incorporate crystallized honey, considering its potential textural differences, into your wellness practices and recommendations? So, if you look at Ayurveda, I mean, we do some amount of naturopathy in Ayurveda. We come from a land where Ayurveda was our, original science. There's a lot of benefits that Ayurveda lists of honey, which is, great for your digestion, good for your heart health, also good for vision, good to lubricate your joints. These are enamored in the Ayurveda, not proven too much by modern medicine, but we do know that if you consume honey, it has beneficial effects on most of your systems, your immune system, your digestion, your cardiometabolic health, skin, vision. All of these are benefited to some extent or have some amount of, benefit that they can get from consumption of honey. So it can add to health benefits on an overall systemic level. Also, it's always a better choice than white sugar. So it's also not giving you the, the ill effects that white sugar comes with, which is a very high glycemic load, too much of increase in insulin production. Also, it has, substances that are used to mill and process the white sugar, which are lacking in the honey. So you're eating much cleaner form of sugar when you eat honey. Ms. Chandra, I'd also like to understand, as the founder of Manjari Wellness, how do you incorporate honey, particularly crystallized honey, into your wellness practices and recommendations? Yeah. So there is crystallization is a physical process, which means that if the honey is sourced in a certain way, if the fructose, glucose, water content of honey is of a specific ratio and honey is stored at a certain temperature, there is a possibility that honey will get converted into crystals, which is a physical form of the honey. Crystallization of honey can cause the honey to just look a little different, but there is no change in the properties, in the usage, in the benefits that honey offers. So there is absolutely no difference between a non-crystallized fluid form of honey and a crystallized format of honey. From a holistic wellness perspective, do you see any specific advantages to using crystallized honey over regular honey? Yeah, so when people pick up honey, they want it to be a viscous fluid, whereas the thing about honey is that depending on the glucose, fructose and water ratio, a certain part of honey will crystallize. It will also crystallize depending on the temperature at which the honey is stored. So if the temperature, the sourcing of honey is of a specific type, then there are chances that there will be crystal formation in the honey. If there's crystal formation, there's nothing wrong with that honey. It's absolutely as safe as any other form of honey, which is liquid at room temperature. So there's no need to worry about crystallization because it's a natural property of the honey itself. Having said that, if you think that you don't want to allow the honey to crystallize,
then you have to store it at the right temperature and not, freeze it a lot. Can you share some unique ways to integrate crystallized honey into various wellness routines such as skincare or natural remedies? Yeah, so honey is one of the things that is advised for skin care. People with dry skin, people with skin which is sagging or has pigmentation and blemishes. It's a good thing to add to if you're making a mud pack or a face pack at home with, let's say, turmeric or besan, you can always add curd and honey to it. That improves the viscosity of that pack and it gives better benefits. It can be used on the skin like a face pack. It can be used in the things that we make, for example, liquids that we drink, for example, detox drink and lemon water. It can be added to that, which is good for your skin and your overall digestive health. And honey can also be, is also a part, by the way, of a lot of cosmetic products that are being, sold across brands. These products also contain extracts of honey. And that is also a reason because of which honey is being used is because it's beneficial overall for our skin. It also adds suppleness, radiance to our skin, so it can be used for sure. In your experience, Ms. Chandra, do clients have misconceptions about crystallized honey? How do you address these concerns and educate them about its benefits? Not specifically. It's not that there are too many concerns, and crystallization is not I don't get many questions around that. Questions are more about whether we should have honey or whether it is a better alternative than sugar. So those questions are always there, whether it's safe to consume honey and if honey is a better choice than sugar or sugar syrups or artificial sweeteners. That's a question we always get. So yes, we do tell them that honey being more natural, being slightly more beneficial. So those are the questions we typically get in a clinical setting. Looking ahead, do you foresee any future trends or growing interest in incorporating crystallized honey into various wellness practices or products offered by wellness programs? Crystallized honey is like any other form, a normal honey. It's absolutely normal. Only you have crystals formed in it, which is the physical amorphous honey converted into crystal honey. So it's only the physical state of honey that has changed. The properties, the nutritional value, the sweetness, all of it has not changed. So it can be used like normal honey. You can add it to warm water with lemon and have it in the morning if you like to have honey like that. You can have it added to your desserts or puddings that you're making at home instead of using white sugar. You could also use the honey as a base of whatever syrups that you're using at home instead of using commercially available sugar or commercially available syrups. So crystallized honey can be used like any other form of honey would be used in whatever way in cooking it is being used in the house. It is safe to use crystallized honey like normal honey which is not crystallized. Thank you, Ms. Chandra. Your insights are inspiring. Yeah, thank you so much, Suvesha, for having me on this show. It was really nice to be here and good to talk about a common topic which a lot of people have misconceptions about. We've learned that crystallized honey is a sign of good quality and can be enjoyed in many ways. But what if you prefer your honey a bit runnier? The key is gentle heat. As we come towards the end of this show, we learnt crystallization is a natural process that occurs in pure, unadulterated honey. Processed honey, often heated and stripped of its beneficial properties, is less likely to crystallize. So the next time you encounter crystals in your honey jar, rejoice. It is a testament to the honey's purity and natural state. Crystallized honey is perfectly safe to consume as is. So thank you for watching. Stay tuned for more. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality.
डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है बिग करप्शन। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं? PM takes tukre swipe at Congress, says Kharge's remark on Article 370 has exposed Congress mindset. Bengal governor calls for action, but TMC netas set to campaigned at NIA attack site in East Midnapur. आकर के 370 का क्या लेना देना? मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है? ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? PM rips apart Congress over Kharge's Kashmir remark, reiterates J&K as an integral part of India. Day after NIA team attacked in Mamata's Bashan, Locket Chatterjee's convoy attacked in Hooghly now. Up netas converge at the Jantar Mantar in Delhi, hold a hunger strike as a mark of solidarity protest over Arvind Kejriwal's arrest. And in Kashmir, Mehbooba takes on Farooq Abdullah over collapse of the Gupkar alliance. Alright, BJP Hooghly MP Locket Chatterjee on Saturday alleged that Trinamool Congress supporters attacked her car in West Bengal's Hooghly. According to her, the alleged attack on her vehicle was executed at the behest of Bansberia Municipality's Vice Chairman Shilpi Chatterjee. The Trinamool, of course, has denied it. But let's look at the sequence of events through those sound bites that have come in on this story. अभी आज हम लोग का प्रचार चल रहे थे 9:30 बजे, जब पूरा थोड़ा सा खाली था, काली पूजा चल रहे थे। मैं काली पूजा में गई थी, वहां पे सब आसपास का लोग था, बहुत सारा महिला लोग था। हम लोग एक साथ पूजा में पार्टिसिपेट किया था। पूजा से पार्टिसिपेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, मैंने गाड़ी में उठा, थोड़ा सा गया, देखा लंबा लंबा बांस को लेके और उसमें बैम्बू के साथ ब्लैक फ्लैग लेके आया और बहुत सारा लोग, अचानक देखा पूरा गाड़ी घेर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ और इतना सामने तोड़फोड़ हो रहा था, मेरे गाड़ी में फ्लैग था और फ्लैग को पूरा एकदम, मतलब जो डंडा में फ्लैग था, पूरा फ्लैग को पूरा तोड़ा, स्टिक को पूरा तोड़ा
और बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे। और सामने एक लोग हमारा सिक्योरिटी था, वो बाहर चला गया था, तो कोई गाड़ी में उड़ने का रात में कोशिश कर रहे थे। हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया, और फिर भी बहुत सारा रास्ता, आप बोलेंगे तो 500 मीटर रास्ता पूरा ऐसे करके पूरा जा रहे थे। और उसके बाद पता चला कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में ये हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ। इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना ये करेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही मुद्दा है अभी कि करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। करप्शन फ्री बंगाल चाहिए। जितना हमको रोकने का कोशिश करेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने जी क्या सोच रहे हैं कि हमारा नेताओं को गाड़ी के ऊपर हमला करके, हमारे नेताओं को अटैक करके, निश्चित प्रामाणिक जैसा हमारे मंत्रियों को अटैक करके आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे क्या? पब्लिक को डरा के, हमारे कार्यकर्ता को केस देकर, कभी कभी उठाकर, थाना में बुलाकर आप लोग जीत जाएंगे क्या? मैं एक तो वहाँ पर अराजक तत्वों का जो सरकार के संरक्षण में जो है वो एक चुनौती है, वो है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती वहाँ पर जो सरकार है खुद अपने आप में है फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए। वो जिस तरह का उसका व्यवहार है और जिस तरह से वहाँ पर जो तालिबानी हरकतें हो रही हैं, उन तालिबानी हरकतों को भी सरकार का संरक्षण और सरकार उसको जो है वो सुरक्षा दे रही है, ये अपने आप में है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग इस दिशा में देख भी रहा है, उसके बारे में बताया भी गया है। जिन क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र है, चुनौती भरे क्षेत्र है, उसके बारे में हमारी पार्टी ने भी लिख करके दिया है। और चुनाव आयोग इसके विशेष प्रबंध वहाँ पर स्वतंत्र भयमुक्त माहौल में अपने मतदान का, मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता कर सके, ये ज़रूरी है। कुभाषा और गुंडा लोगों का समर्थन लेके हमला करना, इसीलिए जो हमला हुगली में हुआ हमारा कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी के ऊपर, हम उसका निंदा करते हैं। और जो दोषी पाया गया उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और चुनाव आयोग को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, और कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके चुनाव का प्रचार और वोटिंग सारे हो। The Trinamool, of course, seems to be in a mood to brazen it out. The party has planned a massive rally exactly at the site where NIA officials were attacked in East Medinipur before the Locket Chatterjee attack happened. A day after that, SP of the district, Soumyadip Bhattacharya, made this statement. Listen in. খুব ভোরের দিকে এনআইএর একটি দল আপনার ভূপতিনগর থানাতে পৌঁছয় এবং ভূপতিনগর থানার পক্ষ থেকে তাদেরকে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয় একটি পুরনো একটি কেসে। কিন্তু দেখা যায় যে আগে থেকে তাদের আরো কয়েকটি দল ভূপতিনগরের বিভিন্ন জায়গায় ছিল। পুলিশ এর পক্ষ থেকে সমস্ত টিম যখন ভূপতিনগর থানা থেকে বেরোচ্ছে, সেই সময় খবর আছে যে এনআইএর যে সমস্ত টিমগুলি আগে থেকে ফিল্ডে পৌঁছে গেছিল তাদেরই একটি টিম আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে পুলিশ পৌঁছবার আগেই তারা সেখান থেকে যাকে ডিটেইন করা ছিল একজনকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ঘটনায় একটি গাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে এবং একজন মাইনর ইনজুরি হয়েছে, যেটা আমাদের কাছে খবর আছে। একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত করা হচ্ছে। उसका तो कोई लड़ाई का ताकत नहीं है। मोदी का दो भाई ईडी और सीबीआई, वो उसको लेके वो लड़ रहे हैं। उसको खास ताकत नहीं है संगठन का, एकदम सही नहीं है। वो भी स्पॉन्टेनियस कोई हुआ था। लोग 2 साल पहले का बात
लेकिन अभी चुनाव के पहले ये सब करना NIA का उचित नहीं था। All right, while the BJP has now launched an attack on the West Bengal government over the law and order situation in the state, first Sandesh Khali and now Medinipur. Listen in. बहुत ही घटिया काम चल रहा है वेस्ट बंगाल में। इस सरकार के द्वारा जानबूझकर इसको किया जा रहा है कि यहाँ सेंट्रल जो फोर्स है, सेंट्रल का जितने सारे हमारे फोर्स और जो डिटेक्टर सब्जेक्ट है, मतलब कि जैसे NIA है और भी सारे हैं, ये लोगों के ऊपर आक्रमण का मतलब है यहाँ का डेमोक्रेसी का संतुलन विकलन हो गया है। इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सूचित करना चाहता हूँ कि इस विषय पर नज़र रखकर यहाँ और भी प्रोटेक्शन बढ़ाए, इलेक्शन फ्रेश एंड फेयर हो, इसके लिए भी मैं मांग करूँगा इलेक्शन कमीशन को। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मां माटी मानुष नहीं, बल्कि इनका नारा बन चुका है बॉम्ब, ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि TMC का मतलब टू मच करप्शन भी है और टू मच केओस भी है। करप्शन को भी बचाना है, केओस भी करवाना है। और ममता दीदी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि कभी आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को बचाने के लिए विधानसभा में बयान देती हैं? कभी आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से एजेंसी के काम पर सवाल चिन्ह उठाती हैं? कभी आपके नेता जब पोस्ट पोल वायलेंस होता है या हर चुनाव साइकिल में वायलेंस होता है और वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल पुलिस की फोर्स जाती है तो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं? और आज जब आतंक और ब्लास्ट के मामलों में जांच करने के लिए NIA पहुंचती है तो आपके साथ ही आपकी पार्टी उनके ऊपर किए गए हमले का भी बचाव करती है। Union Minister Smriti Irani took a dig at Rahul Gandhi today while campaigning in Chennai. Irani said while many like him might come and go, the nation would remain there. She also charged the India alliance of double standards while using the name of India, even as it backed the Tukre Tukre gang in Delhi. Listen in to what she said. Campaigning in Chennai, Union Minister Smriti Irani launched a pincer attack on the Gandhi sign. Smriti Irani said many like Rahul Gandhi have come and gone, but Hindustan is, was and will remain. Smriti said Rahul will be booted out from Wayanad just like Amethi. अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडिया अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, साथ रहेगा। Smriti Irani, who has been relentlessly campaigning, is going all out to corner the Indie bloc over a slew of issues including the Sanatan insult and the Pran Pratishtha boycott. Bureau Report, Republic TV. कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया,
उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? बिहार और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है, सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से? कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। साबिर सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। Aam Aadmi Party ministers and workers staged a hunger strike across India, more specifically Delhi today, to protest against the arrest of AAP convener and Chief Minister Arvind Kejriwal, who is the prime accused in the Delhi excise policy scam. While the ED claims proof against him, calling him the mastermind of the liquor gate, AAP continues to rally behind their leader. Look at this report on how the protests panned out, particularly at Jantar Mantar in Delhi. The Aam Aadmi Party leaders and workers observed a pan-India Samuhik Upwas against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party has organized this protest, hunger strike over here in the national capital at Jantar Mantar to register their anguish against the arrest of their party convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now the Aam Aadmi Party from this particular dais is crying vendetta, they're crying foul, that it is because of the BJP ruled government at the center who's trying to muzzle the voice of the opposition, and as they claim that this arrest is a bid in support of that vendetta. Despite the grave allegations,
AAP ministers continue to cry foul. लोगों में जो सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद, जो सहानुभूति है लोगों की, वो बिल्कुल साफ निकल के आ रही है। और इलेक्शंस के बिल्कुल सर पे जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, ये बिल्कुल गलत है। और इस तानाशाही के खिलाफ जो लोग हैं वो बिल्कुल इस बार लोकसभा के इलेक्शन में वोट के द्वारा जवाब देंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। In response, the BJP too hit the streets. देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहाँ अंदर जा नहीं सकती। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। Launching Sharab se Sheesh Mahal campaign, BJP called out the corruption model of the Delhi Chief Minister. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है। और आज जो यह आम आदमी पार्टी एक बनावटी सहानुभूति का ड्रामा कर रही है, उसको दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। The liquor gate face-off just refuses to simmer down. Bureau Report, Republic TV. Republic TV. All right, after the collapse of the Gupkar alliance in Jammu and Kashmir, PDP chief Mehbooba Mufti took out on Farooq Abdullah today, saying she was disappointed at Farooq's decision to snub the ties with the party just ahead of elections. Listen in. हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, ख़तरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज़ के साथ दिन दहाड़े जो है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ मिलजुल के चलें, और इसके लिए मैंने पहले से अंत तक कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे, और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज़्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा ख़त्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कश्मीरी, मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरा के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। खासकर 370 को गैर आईनी तौर से ख़त्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है।
उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में